Hi everyone, welcome back to my channel. Happy festive season. So, we all know that Diwali is around the corner and there are a lot of sales going on right now. तो मैंने सोचा why not make a video of all the decor and furnishing items जो मैंने इन sale से या online खरीदे हैं that I'm going to decorate my house with in this Diwali and share with you guys. हो सकता है इनमें से कुछ items आप सभी को भी पसंद आए and then you can buy them for Diwali for your home. So without further ado, let's get started. I have two type of items, decor items and furnishings. Also watch this video till the end because I'm going to show you my favorite item. Actually, सब कुछ ही मेरा favorite है, but that one favorite item at the end of this video. So product number one on the decor list are these really pretty lanterns. They come in a set of two, and one is a taller one and a smaller one. They also come with this LED light that you put inside these lanterns और इसको आप यहाँ switch से on और off कर सकते हो. You can use these kind of lanterns in any corner of your house जिससे वो corner ऐसे lit up हो जाएगा and it is going to look really pretty. Product number two are these tea light candle holders. They look like this up close. ये ग्लास जार और एक ऐसी डिश आते हैं. This also comes in a set of two. इसके अंदर आप एक कैंडल, रियल कैंडल या फिर जो ऑटोमेटिकली फ्लिकरिंग कैंडल्स आती हैं आप उन्हें यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज दिस टू स्टाइल योर सेंटर टेबल या आपका डाइनिंग टेबल एंट्रेंस ऑफ योर हाउस एंड इट्स गोइंग टू लुक रियली नाइस देयर. Item number three is this dish that I got. Puri festive feeling wali dish hai ye. This I'll keep in the middle of my center table. इसके ऊपर कुछ petals और एक candle या दिया इसके अंदर रख के it's going to give a really festive vibe to my coffee table in my living room. Next item that I got are these Shubh Labh sign. This is how it looks up close. I'll probably use this in the front entrance door or maybe in my mandir. अभी मैं sure नहीं हूँ, but this is how they look from close. Next up are these urlis. So ये hanging urli है. ये भी set of two में आती है. This is the bowl जिसमें आप पानी भर सकते हो या आप flower petals और दिया रख सकते हो. And then this is the really pretty lotus type flower वाला standing. So ये जो edge है आपकी उर्ली में यहाँ fix हो जाता है and then it becomes a standing urli and you can go ahead and hang it wherever in the house you want to hang it and light up that corner. Next item are these candle holders. तो ये भी set of two में आते हैं, a taller one and a smaller one. मैंने दो set मंगाए हैं. I'll style these on top of my dining table. इनको स्टाइल करने के लिए आपको दिवाली नहीं चाहिए, ये आप कभी भी किसी भी सीजन में अपने घर में स्टाइल कर सकते हो. दे आर रियली प्रिटी, हैव अ ट्रायंगल काइंड ऑफ लेग्स और इनके ऊपर रखने के लिए मैंने कुछ ऐसे फ्लिकरिंग बैटरी पावर्ड लाइट्स मंगाए हैं. दे हैव अ स्विच एट द बॉटम जिसको अगर आप चालू करो so they look like real candles. Can you see that flickering thing that's happening? So this is how I am going to put them on these candle holders. See, it looks so pretty. So there is one more item that I got but वो time से नहीं आया so I could not show you in real, but I'll put a picture of it right here. These are soy wax candles जो दिए में हैं. They are so pretty. मैं probably इनको जलाऊंगी नहीं and I'm going to use it only for decor purpose. Follow me on Instagram. Whenever I like get that parcel, I'll surely show you all over stories or maybe I'll post it there. So do follow me on Instagram. I'll leave my handle right here. Item number one is this throw blanket. See it up close. It's completely woolen and cozy. विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, जब तक दिवाली का सीजन आता है तो ये परफेक्ट कोजीनेस ऐड करेगा आपके लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में. So I got this from a brand named Vari. I'll put the link of it down below in the description box. Next item is this table runner that I got from Fab India. I got this one
in half the price of what it is actually from Myntra. I think I got this for 400 something rupees और ये मैं अपने डाइनिंग टेबल पे रखने वाली हूँ. डार्क कलर में इसलिए लिया है जिसमें जब इसके ऊपर आप कैंडल्स रखोगे या आप गोल्डन चीजें रखोगे जैसे मैंने ली हैं, दे विल रिफ्लेक्ट लाइट एंड वो ज्यादा प्रिटी दिखेगा. अगर मैं उसको एक लाइट कलर के ऊपर रखूंगी तो वो थोड़ा डल हो जाता है. टू मेक इट शाइन अ लिटिल मोर, इसलिए आई हैव टेकन दिस darker color. It has this patchwork here and baki pura is this really pretty print. The next furnishing item is my favorite and that is decorative pillows. तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से इस चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट मैं डेकोरेटिव पिलोज को लेके कितनी ऑब्सेसिव हूँ. मेरे पास एक कलेक्शन है ऑफ these pillows and pillow covers. So let me know in the comments below if you want to see a video in where I share that collection. या आपको कुछ styling tips do around decorative pillows, put your comments down below. So I'll share all of them with you. The first one is this. It's pretty. It has a little bit of texture in it अगर आप पास से देखोगे. So me being someone, I do not like a lot of jagmag या starry things so I don't like that kind of things in my decor style. So I try gravitating towards deeper warmer colors या जिन पे texture हो. तारे सितारे something that I stay a little bit away from. इसलिए आपको मेरे किसी भी डेकोरेटिव पिलोज में या आइटम्स में वो तारे सितारे वाली चीजें नहीं दिखेंगी. इट विल बी मोर ऑफ कलर, टेक्सचर, ऐसी चीजें ज्यादा दिखाई देंगी. That being said, the next one is this one. This also I got from the Myntra sale. Before this one was from Amazon, and the last one that I have are these. इसके ऊपर एक फॉक्स लेदर टाइप का पैटर्न है. ये सब एक्सेंट पिलोस की तरह काम करते हैं. दिस इज लाइक आई थिंक इन एन 18 by 18 size. So these were some of the furnishings that I've got from my house. Some are yet to come, so you know where to find those. It will be there on Instagram whenever I receive them. And now is the time कि मैं आपको अपना favorite product बताऊं इस पूरे haul में, which is a decor item. It's a little big. Let me bring all of it here first and then show you guys how it looks. I just said gowns. Show you guys. Show you guys how it looks. So the last item and my most favorite item is this humongous Urli set. तो मैंने ये इट्स लाइक 1 2 आई थिंक 9 आइटम्स हैं इसमें टोटल, और ये सब अलग अलग आते हैं. एंड देन यू बिल्ड दिस थिंग अप और आप इसको ब्रेक डाउन करके बहुत आराम से रख सकते हो. इट लुक्स सो प्रिटी. आई एम गोइंग टू स्टाइल इट इन सम पार्ट ऑफ माई हाउस विथ फ्लावर्स एंड diyas all around it. The best part is I got this entire thing for just 1000 rupees. It's a steal deal, you guys. It's a steal deal. I'll put the link in the description. Go get yourself this. These were all the items that I got from my home. Come back next week because I'm styling all of them. There's also a room makeover that I'm currently working on and a special project. So I've planned a lot of fun content for you guys throughout the coming months. Consider subscribing if you haven't already. Comment your favorite products. मुझे बताओ आप दिवाली कैसे मनाने वाले हो, आपने क्या नई चीजें खरीदी अपने घर में दिवाली के लिए. I love interacting with you guys in the comment section. So come say hi there. I'll see you guys next week with a new video. Bye guys.